Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol थोड़ा हरी कथा हो जाए। भूख लग रही कि नहीं है? भूख लगता है? नहीं नहीं लगता। रात को खाया था। रात को खाया लिया। रात को मैंने मेरे भूख लगे थे, मैंने एक एप्पल खाया, 2 एप्पल एप्पल था। रात 10 बजे भूख लग रहा है। कितना बजे? 10 बजे जब सो गया ना तब भूख लग रही एप्पल खा। एप्पल था हैं? कमरे में था। मेरे पास था ना, वो मुड़ी था, मुड़ी खाए हैं एप्पल। छोटा छोटा था ना वो, ठाकुर जी के दिया था 3 और से 3 था, से 2 खा गया। अभी अभी तो पड़ा है, 2 पड़ा है। भूख लगते तो क्या करें, खाना पड़ता है। पीनट्स भी है ना। पीनट्स खाने से एक ये हो जाता है। पीनट्स किसके साथ खाना, पीनट थोड़ा खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। पीनट्स खाने से कुछ क्या बोले, कुष्ठबद्ध हो जाए। कुष्ठबद्ध क्या बोले, पायखाना सॉफ्ट हो जाता है ना, क्या बोलते हैं? सॉफ्ट हार्ड हार्ड कॉन्स्टिपेशन। थोड़ा बहुत खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा थोड़ा, हाँ हरी कथा। अरे आप आओ, इधर आओ, चेयर लेकर इधर बैठो। आप जो प्रश्न करते हो उसको सुनो। क्या बोला? भजन रस ग्रंथ प्रश्न करने वाला तो लोग है ही नहीं ना। आ रही है बुलाया किचन में आ रही। अरे कोई प्रश्न करे तब तो उत्तर दिया जाता है, नहीं तो ऐसे ही बोलता है। इसमें लिखा है ना, इससे श्री भजन रहस्य ग्रंथ है। 8 जाम है। जाम मीन्स पीरियड ऑफ द डे है, डिवाइडेड इन 8 सेक्शन है, 8 जाम्स। तो मॉर्निंग 3 एंड नाइट 3, so how many? 6. और 1 is called Usha, माने dawn, और another is called when sunset, daylight come, daylight finish and sunset, नहीं sunset and night coming, दोनों साथ में जो है उसी कहा जाता है संध्या कहा जाता है। संध्या मीन्स ना सुबह ना शाम। ज्वाइन है। तो कितने हो गए? 7 हुए। नहीं 8 हो गया ना। एक सुबह एक शाम को। सुबह नहीं, सुबह क्या होता है? मॉर्निंग। हाँ। मॉर्निंग उसके प्रातः काल कहा जाता है। एक होता है ब्रह्म मुहूर्त। हाँ। ब्रह्म मुहूर्त में एक हो गया, और दूसरी है आफ्टर सनसेट, then the night is coming, darkness coming and light disappear. That joint is called the sandha. Sandha means this, because Sanskrit was usakal, sandhakal. This thing. Usakal means that is called Brahma Muhurta. That's actually, and before sun rises, 1 hour 36 minutes. Usha, udilo runo purava bhage, dijamani gora amani jage, bhakata samoha loiya sate,
ওরা গেল নগর অপরাজে। So morning to midday 3 or no, morning to सुबह 3 होता है और रात्रि काल में 3 होता है। आफ्टर सनसेट 3, उसको यही छोड़ करके उषा काल और संध्या छोड़ करके तो 2 छोड़ गया, बाकी 3 रह गया। और इधर उषा काल को छोड़ करके बाकी 3 रह जाता है, इसलिए प्रातः काल कहा जाता है। निशांत काल, निशांत लीला मीन्स द एंड ऑफ नाइट। एंड ऑफ नाइट हियर इज सेइंग द 6th danda, before sun rises 6th danda, that is called nishanta bhajan. Ek danda means one danda means 24 minutes. So 6 danda, 6 dandas means 3 घंटे 3 hours हाँ नहीं 24 3 hours how many? दूसरी ग्रंथ में अच्छा लिखा रहता है, इसमें उसमें टाइम बिल्कुल टाइम लिखा रहता है 3:30 से लेकर के सुना था कि 3 घंटे का एक नहीं, 8 का वो नहीं होता है, वैसे नहीं। इसमें नियम होता है, कुछ समय जो कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में और किसी में कम होता है। अच्छा ये नहीं है सबके बराबर हो जाए। जी मध्याह्नकालीन लीला जो है, मिड डे जो लीला जो है अंडरस्टैंड, मिड डे लीला दैट इज लिटिल बिट लॉन्गर है, अंडरस्टैंड। मिड डे लीला about 4 hours, not 4 hours, almost 4 hours. I think 3 hours, 35 minutes, something this. 6 Huh? How many danda? 1 danda means 24 minutes. मिड डे का कितना डंडा है? 6 है? danda. इसमें जो लिखा है भजन से भक्तिमोहन ठाकुर जो लिखा है, और दूसरे ग्रंथ में हम लोग फॉलो करके लिखते हैं। इसमें लिखा है भक्तिमोहन ठाकुर लिखते हैं रात्रि शेष दंड 6 दंड 6 दंड मैंने 24 into 6 144 मिनट है 144 मिनट 100 2 घंटे तो 2.4 मिनट घंटा वो लिखा है। मैं ये 2.5 है लगभग 2.5 घंटे 2 hours 34 minutes. 24 minutes. So, Yeah, 2 hours 2 hours 24 minutes. 24 minutes. That means 44 minutes. 3:30 or there. If sun rises 6 o'clock, just give an example. That will be Perspective. before sun rises. How many danda? How many? 2 hours 24 minutes. So that means 3:30 36. लगभग 3:30 बजे के ऊपर था। हाँ उसमें से वो ब्रह्म मुहूर्त है तो ब्रह्म मुहूर्त है, किंतु कैलकुलेशन ये लिखा है। अच्छा है ये बांग्ला ग्रंथ में ठीक दिया, ये हिंदी में पूरा नहीं दिया गया, कैलकुलेशन किया नहीं। और मेरा सवाल था कि जो शाम का समय है जब ठाकुर जी लौटते हैं गौचारण के बाद में, तो उस समय जो हम आरती करते हैं उसमें मेडिटेशन क्या होना चाहिए? उस समय भी है नहीं, उस समय होता है जैसे when sun goes down. हाँ, अभी तो पूरा
सनसेट हुआ नहीं है तो तो शाम उससे पहले आ जाते हैं ना, अंधेरा होने से पहले आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तब अब उस समय अंधेरा होता है धीरे धीरे। उस समय वो क्या बोले कृष्ण स्नान आदि करते हैं ना, गोचारण करके आते हैं। हाँ। तो गाय में धूल लगा रहता है, तो उस समय वो स्नान आदि कराया जाता है। ब्रजवासी लोग जो है वास्तव रूप में जो है ये लोग 2 बार स्नान करते हैं। हाँ समझे, एक प्रातः काल में स्नान किया, एक्चुअल 3 बार स्नान करते हैं। एक है प्रातः काल, क्या बोले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दूसरी मध्याह्नकालीन स्नान मिड डे स्नान, और तीसरी सायंकालीन स्नान। माने अब बिफोर सन सेट्स दे आर टेकिंग बाथ। 3 बार स्नान करते हैं लोग, क्योंकि लोग गोचारण करते हैं। आप तो ऑफिस में जाते हो, इसलिए जरूरत नहीं होता है। धूल मट्टी लगती है, धूल मट्टी लगते है ना, इसलिए उसको स्नान करना पड़ता है। दोपहर में एक स्नान करते हैं। मध्याह्न स्नान, दिस इज प्रातःकालीन स्नान माने ब्रह्म मुहूर्त स्नान, और मिड डे स्नान, दिस इज नेसेसरी। मिड डे, अच्छा। इट इज फॉर एवरीबॉडी है। और मिड डे प्रातःकाल स्नान इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त स्नान, एवरीबॉडी हैव टू टेक बाथ ब्रह्म मुहूर्त स्नान है। और अनदर स्नान मिड डे स्नान, दिस इज नेसेसरी। मिड डे का क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया है? जो मिड डे, क्योंकि हम जो स्नान करते हैं इसमें गर्मी होता है, शरीर में मैल भी हो जाता है, उस पर स्नान करना पड़ता है। वो तो शाम को करते हैं नहीं, फिर शाम को कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, किंतु शास्त्र के अनुसार 3 बार स्नान की विधि दिखा है। जैसे राधा जी के 3 बार स्नान बताया गया है। श्रीमती राधिका ये त्रिविध स्नान बताया गया। तो जो हम लोग जो गायत्री करते हैं इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा है। 3 बार स्नान करके 3 बार जो गायत्री। हाँ, इसके 3 बार स्नान करके तब जो गायत्री मंत्र जप किया जाता है। एक्चुअली ये विधि दिया गया अद्वैतवादी सन्यासियों के लिए है। अद्वैतवादी सन्यासी जो है ये लोग 3 बार स्नान करते हैं। हाँ समझे है। तो स्नान की विधि दिया गया। तो राधा जी भी 3 विध स्नान दिखा रहे हैं। राधा जी के एक प्रातःकालीन स्नान है, दैट इज कॉल्ड कारुणामृत स्नान, देन तारुणामृत स्नान, देन लावणामृत स्नान। ये 3 प्रकार स्नान दिखा रहे हैं। स्नान की विधान दिखा रहे हैं। प्रातः स्नान नरकं जाति, माघ स्नान विशेषतः, परस्त्रीकंठ स्नान नरक वैकुंठ मापनाथ। प्रातः स्नान नरकं जाति, इंग्लिश में भी प्रातः स्नान नरकं जाति। One who takes birth in the early in the morning Brahma Muhurta, he will go heaven. So everybody have to take bath early in the morning. That is called Pratha Snan. Pratha Snano Narakam Jati. Pratha Snan means the before sun rises 1 hour 36 minutes. That's Snan. Understand? Before sun rises, in this middle you have to take bath. That is Pratha Snano. Every day you take bath early in the morning, then you will go heaven. So Pratha Snano Narakam Jati. Magha Snano Vishesata. If you take bath in the Magha month, month of Magha, then you will go and Vishes, what is it called? You will go Pratha Snano Narakam, Magha Snano Vishes. That means you will go Brahma Loka, Sattva Loka. Brahma Loka means Sattva Loka. The place of Brahma.
Magha mas. Magha. Magha mas. Magha mas 1 month, there is Winter, right. Magha mas, understand? That is called the end of December and the beginning winter. of Middle of winter. January. Middle of winter. Understand? Or Parastri Kantha Saglagna Stana Vaikuntha Mapnati. Parastri means, para means best. Stri means Vrindadevi. That means Tulasi. If you put the Tulasi around your neck and take bath, then you will go Vaikuntha. Yeah, Parastri means not the others married lady. This is not the meaning. Understand? Para means Srestha. Stri means Vrindadevi. This is the thing. There are the many synonyms, no? Synonyms. Which synonym you have to use, that is the important. Sometimes Sahaja, they are using the bad interpretation. Actual Shastra is saying this way. You understand? Yeah, for Stri means even. Stri means not the always the meaning of ladies. Stri means there are many meanings of Stri. So here Stri means Vrindadevi. That means Tulasi. If you put the neck bed around your, if you put the neck bed, and you take bath, then you will go Vaikuntha Dham. So this is the meaning, perfect meaning this is. So now coming in this is Trividha Snan. Srimati Radhika is also Trividha Snan. And Pratha Snan. Then Early in the morning bath? Madhurya Snan and Midday bath? and evening Snan. And evening bath. Understand? Here this compare Srimati Radhika's compare Snan, bath, Pratha Snan, and that is called her, what is called? Nectar of Early age. Because different ways. Then age are then Nava Jovan, Bhakta Jovan, Purna Jovan. This is why I explain this. Youthfulness. That is a Kornamrita Snan, Tarunamrita Snan, Lavanamrita Snan. This way, different stages. So now coming this, actually we are going to this. When Krishna is returned back from herding the cows, गोचारण करके जब कृष्ण लौटते हैं, वो शाम हो जाता है ना, ये सायंकालीन भजन भाव संध्या के पश्चात 6 दंड है। आप जो करें सायंकालीन लीला इसमें लिखा है कविंद्र विद्वान के अनुसार, गुरुदेव राधिका सायंकाली कृष्ण लागे पठाइले सखी हस्ते विविध मिष्टान्न, कृष्ण भुक्त शेष आनी सखी दिल सुख मानी, पाया राधा होइल प्रसन्न, स्नात रम्य वेश धरी यशोदा ललित हरि, सखा सह गोदहन करे, नानाविध पक्क अन्न पाइया होइल प्रसन्न, स्मरी आमी परम आनंदे। श्री राधा सायंकाल आया जानकर हृदय में अति उत्कंठित है कि कृष्ण अब गोचारण कर आते ही होंगे। शुक्ल वस्त्र धारण कर सखियों के सहित
रसी घर में उन्होंने अमृत केली, कर्पूर केली, चंद्रकांति, मोदक आदि अनेक मिष्टान्न तैयार किए। यानी उस समय जो कृष्ण के जब भोजन कराते हैं, हाँ सुनिए, उस समय कृष्ण के भोजन कर दिए, शंकर के भोजन दर्शन कर दिए, इस प्रकार। और उस समय माँ ब्रजेश्वरी बड़े प्रेम पूर्वक सब वस्तुओं का श्री कृष्ण, बलराम और सखाओं को परस्पर, उस समय जो है माँ यशोदा जो है कृष्ण बलराम सखाओं के जो है वो भोजन कराते, इसमें लिखा है। इसको लौट के आते हैं, जब लौट करके आते स्नान करते हैं, उसके बाद लौटने के बाद स्नान करते हैं, स्नान के बाद भोजन कराते। इंग्लिश बुक इज है, भजन रस कैंडिड, एवरीथिंग इज है। अरे हाई लेवल, दिस इज नॉट फॉर यू। Now how to control your senses, this is enough. Radha Snano Vibhusita, Radha Snano Sakkavastha Niju. Just for your curious I'm saying. Huh? Understand? Everything here you can read. सखी के नंदवन लौटने की परीक्षा कर रही है। सखी आकर वहाँ से वार्तालाप का वर्णन करती हैं, कृष्ण कौन सा वस्तु किस आदर से खाए। क्यों माँ यशोदा उस समय खिलाते हैं, कब? स्नान के बाद। स्नान के बाद जो है माँ यशोदा गोपाल का जो है भोजन कराते हैं। राधा जी तो भोजन करके रख देती है, भोजन तैयार करके। श्रीमती राधिका सी कुक्स, बट मदर यशोदा सी फीड टू कृष्ण, माँ यशोदा गोपाल को खिलाती। तो राधा जी क्या करते थे उस समय सखियों के साथ, श्रीमती राधिका ये वार्तालाप करते, कृष्ण के कौन सा भोजन पसंद है, कौन सा अच्छा है। अनेक प्रकार भोजन तो बने हैं, तो राधा कृष्ण के कौन सा भोजन माने प्रसाद उनका अच्छा लगा, ये श्रीमती राधिका जो है वो देते हैं। किंतु ये होता है क्या, बंगाल व ये भारतीय संस्कृति ये होता है, जो भोजन करते हैं ना वो भोजन दो व्यक्ति परोस कर सकते हैं, एक माँ नहीं तो स्त्री, दूसरे के नहीं है। मदर और वाइफ, तो हियर कृष्ण इज नो वाइफ, सो मदर यशोदा शी इज सर्विसिंग, but that time ladies they little bit far, understand, actually this is the rules also. Ladies not to what is serve, or only ladies can serve if they husband is married, husband wife they servicing their children. So mother Yasoda she is servicing, understand, here this saying ये भोज्य पदार्थ ब्रजेश्वरी माने श्रीमती माँ यशोदा है, बड़े प्रेम पूर्वक सब वस्तुओं श्री कृष्ण बलराम तथा सखाओं के परोसे है, और छल कौशल से धनिष्ठा से श्री कृष्ण का भुक्तवेश राधे के पास सखियों के साथ भिजवा देते हैं। इसके पश्चात जो है वो कृष्ण के जो उच्छिष्ट जो प्रसाद जो है वो ले जाते हैं, धनिष्ठा ले जाती है, धनिष्ठा जो है वो ले जाती राधा जी के है, हाँ ले जाते और लेकर के फिर राधा जी के दे दिए। तो उस समय राधा जी सखियों के साथ ये वार्तालाप करते हैं या कृष्ण के कौन सा भोजन उनको अच्छा लगा है। हाँ समझिए, ये पुस्तक है। राधा जी उस जब कृष्ण भोजन करते हैं तो राधा जी पास में नहीं रहते हैं,
हाँ समझ, स्त्रियां पास में नहीं रहती है? कौन रहते हैं? एक तो माँ जसोदा रहती है, और नहीं तो नंद बाबा अथवा सखा लोग रहते हैं। रोहिणी भी है। रोहिणी माता, वो भी रोहिणी माता सब समय नहीं रहती है, थोड़ा बहुत, क्योंकि रूल्स होता है उसमें। रोहिणी माता भी रहते हैं, उसके बेटा है बलदेव प्रभु है। हाँ वैदिक रूप में माँ जसोदा रहती है। माँ जसोदा गोपाल के जो है भजन कराती है, क्योंकि भोजन होता है स्नेह से, भोजन होता है। माँ से बराबर कोई स्नेह नहीं कर सकते है। माँ से बराबर कोई, नो वन इक्वल लव एंड अफेक्शन लाइक मदर। माँ से अधिक कोई भजन एक स्नेह नहीं करा सकते है। बात सही है कि नहीं है? तो माँ जसोदा क्या करते हैं, भजन कराते हैं। मातृ स्नेह है ना उसमें। जब कृष्ण के जो है माँ जसोदा परोसते हैं, खिलाते हैं। और जब वो इसमें जाते, गोचारण के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो भजन होता है उस समय सखाओं सब करते हैं सब। वो तो सब सखा एक साथ में राग देते हैं, और वो तो लूटपाट करके खाते हैं। सखाओं के जो भजन जो होता है ना, क्या बोलते हैं, लूटपाट भजन होते। लूटपाट समझते हो? छीना छीनी करके, छीना छीनी समझते हो कि नहीं? हरिदास, by force, I will take this, he is saying I will take this, no systematic. Because they are saying I will take this, they are saying this. And actually all they are also feeding to Krishna. Hey Krishna, my mother sent thee, you take this. And then another sakha, Krishna little bit taste, then all the sakhas they took. That is called chena. They are also quarreling, snatching to each other, grabbing each other, and this way. But they have one pointed with Krishna. First they feeding to Krishna, but sometimes they are not also. That's why they are lila. Or this rasgulla they are eating, and they go Krishna, they give him one flower. This is nice. That is called hasaras. So in the forest, when that is called the one kind of, that is called, we are saying that is called picnic. You know, picnic? Banbhojan. That is it. And there are only sakhas, they are but they are most of the time, Baladev Prabhu, he is feeding to Krishna also. Because Mother Yasoda, she told, and Krishna is very shy, Krishna does not want to eat. So Mother Yasoda, she advised to Balram, so you have to feed my son, this. Baladev Prabhu is one thing. Baladev Prabhu, he has Dasa, Sakha and Vatsalya also there. Baladev Prabhu, with Krishna, this Ras also. Dasa Ras also there. And massaging feet of Krishna. When Krishna taking rest, sometimes Baladev Prabhu, he massages feet. And also Vatsalya Ras. And Krishna sometimes does not want, because Mother Yasoda told, you feed to Krishna. So Mother Yasoda, Krishna, Baladev Prabhu, he is giving. And Krishna, you have to eat this. And that's the law. A Shakharas, sometimes Krishna and Balaram also, they also, what is called? Fighting to each other. Wrestling. Understand this way. And they also doing article. What is called? Imitate the sound of the and others birds. This way. So Baladev Prabhu, this way.
So this time the Sankali Lila meant this way. This Lila is going on there. But Madhyana Lila, midday Lila is longer, almost 4 hours. Here we say Madhyana. Midday लीला ना, ये सायंकाली लीला संध्या के पश्चात 6 दंड और अपराह्न लीला 3.5 प्रहर। देखो वो लीला को बोल रहा है दंड और फिर इधर आके प्रहर कर दिया। प्रहर में नहीं, एक प्रहर होता है, हैं? 3.5 प्रहर दिवस से संध्या पर्यंत, वो 3.5 प्रहर से 3.5 प्रहर से फिर इसे कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। एक प्रहर 3 घंटा, तो 3 घंटा 3.5 प्रहर, 3 9 घंटा हो जाए। तारे सुबह से 9 घंटा लगने से प्रातःकाल 6 से 9 घंटा होने से कितना हो जाता है? 3.5 बजे हो जाए। वो उस मठ से जो निकला है ना, वो अच्छा ठीक है। Which one? They say from 11 a.m. to 3:30 p.m. এই যে দ্বীপ প্রহর দিবসে 3.5 প্রহর পর্যন্ত। Second prahar until 3.5 hours. मध्याह्न काल लीला ज़्यादा अधिक है। उस समय जो है ज़्यादातर राधा कुंड आदि लीला आदि वहीं पर होता रहता है। मध्याह्न काल लीला वो चैतन्य मठ से जो ग्रंथ निकले ना, वो अच्छा है। उसमें सारे माने समय दिया गया है। In the English they gave. हिंदी दिया In the English they gave. मध्यरात्रि 3.5। यहाँ पर पहले दिया दंड, यहाँ पर दिया प्रहर। कैलकुलेशन ठीक नहीं होता है ना, उधर कैलकुलेशन है किस समय से किस समय तक कौन सा लीला होगी। From 11 a.m. to 3:30 p.m. Which one? This Mana. Huh? This Madhyana Kalili. Midday लीला 11 to 3:30. 11। yeah, approximately you say from 11 a.m. to 3:30 p.m. What's the reference of it? Bhajanahasa. Four and a half They hours. coming from where? Which grantha? From Parangul. GVP. GVP they are there, because here GVP they are not here. The Gurudev is not written. They calculated. Where they got this? It's really in the book. But written, but Hindi they are not making it because they translate from Hindi to English. Reference for this. Hindi not mentioning here. Maybe they edited, they had research more Japanese Bengali. But it's written here from second prahar to 3. दीप प्रहर दिवस से 3.5 प्रहर पर्यंत। 3-8 प्रहर के दिन क्वेश्चन में तो बंगाली एक्चुअली एक ग्रंथ भजन रस ग्रंथ भक्तिमोहन ठाकुर बंगला में लिखा ना, हिंदी में नहीं लिखा। जितने हमारे गोस्वामी ग्रंथ जो है सब बंगला में लिखा है, बंगला जो है ग्रंथ है। और यहाँ तक भी संस्कृत भी वो बंगला टाइप में लिखा है, माने बंगला बंगाली टाइप है तो संस्कृत किंतु बंगाली टाइप में लिखा है। ये रूप गोस्वामी जितने गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ोगे सारे सब बंगला में लिखा है।
है। इसके परवर्ती काल में जो है कुछ ग्रंथ भी लिखा संस्कृत में, जीव गोस्वामी पाद जो है वो भी संस्कृत में लिखा, सब बांग्ला टाइप है। इसलिए जो लोग नॉन बंगाली है उनके लिए कठिन हो जाता है। आज समझे, यही होता है। इसलिए हम महाप्रभु के जो ये जो है इसलिए अति सहज रूप में सब ये नहीं प्रचार नहीं हुआ। आज 500 साल हो गया है, महाप्रभु के धर्म कहाँ प्रचार हुआ? थोड़ा बहुत है, कहाँ प्रचार हुआ बताओ? यदि हम और क्रिश्चियन और आधा धर्म के साथ तुलना करें, महाप्रभु की इतना प्रचार नहीं है। Languages, because people they are not interested, they don't understand. Everything is in Bengali. Bengali is very specific. Which country? Whole Granth is Bengali. Bengali. So it is difficult first to change it to Hindi, and then now from Hindi to English. So it has taken 500 years. Even Hindi also not proper. This is the main thing. With the mood and the changes. भाव थोड़ा बदल जाता है ना हिंदी। हाँ, दूसरी भाषा में बोलने से वो भाव भी बदल जाता है ना। जैसे मान का था, मान इंग्लिश में कहे, हिंदी में कहे, मान क्या करेगा? मान को इंग्लिश में कहते हैं मान को। If you say the word man in English, it means anger. It's not anger. Man means. क्रोध भी शब्द नहीं है, वो तो इंग्लिश में आप बोल रहे हैं। We are saying sulky mood, but it's in English. Narayan Goswami Maharaj used to say this. Man is man. What is man? When the love and affection is so deep, when it becomes so, love is becomes so condensed. Love and affection so much condensed, and that time their mood is just what you heard here, and showing their anger. Actually, this is not anger. क्रोध में क्या होता है? क्रोध में anger. ये रहता है, sense gratification. In anger, one's ego and sense gratification is prominent. But not in Maan. In Maan, this is not there. Krsna, he goes to Kunjab Chandra. So Srimati Radhika, she is doing Maan. Why? Because, no. To prime. Why Srimati Radhika, she is angry? But she thinks that she can serve Krishna better than what Chandra. She can give the pleasure to Krishna. No one can give as like her. So for this regard, she is doing Maan. Laksmi Devi is actually not Man. Laksmi Devi Krodha. Even Satyabhama is also not Man. That is called abhasa, Mana-abhasa. Laksmi, Satyabhama and Srimati Radhika. You can take three. Laksmi Devi, that is called her anger. Krodha. Understand? Because Jagannath, he did not tell to Laksmi Devi where he is going. Jagannath, he told, I am going to somewhere to recover my health. Where is he going? He did not tell.
But Laksmi Devi, she also sent her spy. Where he is going. You understand? So, Lakshmi Devi, she heard with her spy, Guptachar. Actual Krishna, he is planning going to Vrindavan. Understand? So, that means Krishna, Jagannath, he will, what is called, उनको छोड़ करके जाएंगे. Leave her. Behind. So for this regard, her Krodha is coming. Why Jagannath is going? Because Lakshmi Devi not completely give pleasure to Krishna, but Jagannath. So for this Jagannath is going. But she is thinking, no. See, Krishna have to stay with me. But this is not the prem. This is not the perfect prem. हम ठीक से सेवा नहीं कर नहीं पा रहे, हमसे अधिक कोई अच्छा सेवा कर रहे हैं, इससे हमें प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके प्रेम कहा जाता है. किंतु लक्ष्मी देवी वो नहीं चाहती है. Lakshmi Devi, she doesn't want Jagannath to go. She has pride. This is the transcendental. Lakshmi is thinking, this is my husband. And he will only stay with me whether he's happy or unhappy. He should always stay. And this is not love. This is not real love. This is the nature of the wife in this material world. The wife, what does she want? That the husband always stays with her. Wherever I go, he must also come. And the husband also desires that. This is the Vedic rule. After marriage, this is the rule. They cannot go by themselves, because by living separately, they will be, their minds will be disturbed. At time of marriage, we make this vow that I cannot live without you and you cannot live without me. That's why we have the marriage ceremony. We take these vows by chanting these mantras. You will be present in my pain, my suffering. Why do we marry? In my happiness, we'll be happy, and in my unhappiness, you will share. If you leave me, then how will you be able to pacify me in my distress? This is the rule. That's why we get married. Only for sense gratification? No. If if you are unwell, then, or I am unwell, we look after each other. There's this mutual understanding. This is the etiquette of living together as a couple. It's not that one wife wanders around and the husband is in another place. This is not the culture. This is the bandhan. The marriage ceremony is the binding ceremony. Bandhan. This is the binding between the two. You don't have any independence. Independence.
Swatantra nahi, independent. स्वतंत्र नहीं है, Not independent. वेस्टर्न कल्चर है, शादी किया तो किया, नहीं तो शादी वादी बर्बादी सब। It's not Western culture. Husband wanders here and the wife goes somewhere else. पागल सब। उसके साथ उसके पीछे what exactly? No, one is here, one is there, and then उसके साथ उसके पीछे what? If not husband is not with you, or if you not wife is not with you, their mind disturbed. Yeah, it's wondering what the husband is up to. These are simple. विवाह शब्द का अर्थ होता है, विवाह के साथ एक शब्द दिया गया। क्या शब्द दिया This गया? word with marriage is the word bondage. एक सूत्र में बांधा Bound. गया You are tied with one rope. है। आज समझिए, दोनों हाथ के एक साथ With the hands are bound. कपड़े को बांध देते हैं ना, Like in the ceremony, there's a tying of the hands. वस्त्र गांठ बंधन लिखा है। हम तो करते हैं। We आज perform the ceremony. कराते हो ना, मैं कभी तो अपने अपने हंसता भी रहा। And he smiles when he's doing this ceremony himself. This is the play of dolls. Doll. गुड़िया गुड़ी की खेल है और कुछ नहीं। This is the play of वास्तव में विधि के पालन करना puppets, पड़ता है। dolls. पालन नहीं करते कैसे हो? Dolls marrying हैं? dolls, इसे कहते हैं puppets. विवाह बंधन। भारतीय This, सभ्यता संस्कृति। this is the sanskar, sanskriti, culture of the Vedas. आज जिसमें सीता देवी के उल्लेख आ रहा है, उसमें जो This मंत्र is पढ़ाया the गया है, राम example of Sita Devi. है, रावण मंदोदरी, Ravan's wife, Mandodari. रावण के नहीं छोड़े, उसमें देखो मंत्र में आ रहे Mandodari, हैं, his wife, Ravan's wife, did not leave Ravan सबके नाम for what he did. है, She's a chaste, one of the chaste wives example. Radha Krishna. सबके नाम है, जहाँ पर लिखा है। विवाह एक होता है, बंधन होता है ना। This marriage is one type of जब तक bondage जीवित रहेगी वह पति, जब तक till we are जीवित रहेगी, alive, till as long as we are तब alive. तुम्हारे बंधन है। बात ऐसे ही है। किस पे बोल रहे हैं? Prahar. हाँ? किस प्रहार में पूछ? लक्ष्मी और राधा जी के हाँ, comparison. ये जो कंपैरिजन जो The दिया Maan है, is talking about Maan, the comparison between Lakshmi, Satyabhama, and Shrimati Radhika. ये दे रहा है लक्ष्मी देवी, मान, लक्ष्मी देवी जो कृष्ण जब जा रहे हैं, When Jagannath is going, he didn't take Lakshmi with him. And so Lakshmi Devi became angry. This is anger because he did not take her with him. And he didn't tell him where he is going. As Satyabhama's anger is abhas, semblance of Maan. It's not pure Maan. This word Maan is used only for Shrimati Radhika. In the paramour mood, the speciality of this word Maan. But when we use this word Maan, generally there's no interpretation for that word, translation for it. It's not jealousy, it's not anger. Maan is Maan. Where the love has been condensed so much. Svakiya in married husband and wife, this Maan is not present.
it's anger. क्योंकि सौख्यत्व में प्रेम की Because क्या होता है? in गर्भवती Sakhya, होकर के वो क्या होता है? Sakhya, it married, नहीं, उसके सौख्यत्व जहाँ पर रहता है उसी के कार्य क्या? समंजसा रति कार्य। this is called Samanjasa Rati. है? This एक type साधारण of रति Rati, Sadharani और एक Rati, समंजसा Samanjasa Rati, और एक and Samartha Rati. गोपियों में These जो three दिखा रहा है types of समर्थ Rati, रति deep प्रत्यक्ष attachment, love and affection. उसमें मान जो है In the वास्तव में gopis, है। परक्यत्व इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा ना। we have to try and understand this carefully. पारमार्थिक जगत में In the यहाँ transcendental realm, इसलिए प्राकृत जो नाट्यकार जो है in the ये लोग पारक्यत्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं। and in the normal sense, Parakya Bhav is not accepted because it's only for the transcendental world, Golok Vrindavan. This paramore, छोड़ दी, इस जगत में तो है ही नहीं। you cannot have this इस in जगत this में होना world, भी संभव नहीं है परक्यत्व। and it's not possible in this world. है? तो परक्यत्व जब तक नहीं हो रहे हैं, If there is शुद्ध no मान जो है वो प्रकाश नहीं हो सकता। शुद्ध रूप में माने- Parakya is माने not क्या present, then the pure, perfect, शुद्ध जो मान नहीं हो सकता। this perfect man, spotless, is not possible. Spotless क्योंकि man. परक्यत्व भावित क्या दिखा रहे हैं? इसको समझिए आप सब। परक्यत्व भावित एक गोपियों की जो परक्यत्व भाव दिखा रहे हैं। This वो कृष्ण से वो लोग Parakya कुछ चाहवत Bhav नहीं, of Shri चाहवत Krishna, नहीं। there's no selfish कोई expectation desire or expectation. expectation नहीं है। हम कृष्ण की सेवा जो कर रहे हैं, The केवल service कृष्ण of सुख के लिए। serving Krishna is सत्या में क्या होता unmotivated है? for his अपना exclusive सुख pleasure. और दूसरे के सुख में बनाता है। In Svakiya, अपना सुख, married पति life, के सुख और पुत्र one's सुख, own साथ में happiness, सुख देगा। the happiness of the children, भाग or बंटवारा होती है कि नहीं? the happiness of the husband. सौकिया में क्या होता है? भाग प्रेम जो है वो भाग बंटवारा हो जाता है। In Svakiya, married relationships, बात the इसलिए love है- is divided. है? इसको समझने के लिए प्रयास करो। Try to understand. सौकिया में क्या दिखा रहा है? प्रेम जो है भाग बंटवारा हो जाता है। Yeah, नहीं, the divided love, हो जाता love is divided. है? Swakiya, married. And your love and affection before a child coming. Yeah, before you have a एक बढ़ गया और एक है कि बिजनेस टाइप कि मैं उससे कुछ लेना उससे कुछ लेना। वो तो दूसरी बात है, वो बात तो हम नहीं कर रहे। she's saying that there's a business relationship, but this is not what we're talking about. We're talking about the division of love. ये सौकिया में तो क्या दिखाते हैं? प्रेम भाग बंटवारा। Yeah, in the married life, this love is divided. हाँ सुनिए, यहाँ तो भी जब तक उनके पुत्र संतान नहीं हो रहे हैं, Until you don't have children, then there's love between husband and wife, and also towards the parents. माता पिता के प्रति स्नेह प्रति रहता है। एक पति के घर में आने के साथ ही साथ उनके प्रेम प्रति नहीं लग जाता। When a bride comes into the in-laws' house, they develop that relationship of love and affection for the mother and father, the mother-in-law and father-in-law. The bride, she has affection for the relatives. Now this love and affection is divided. This is called samanjas. Like the Rukmini and Satyabhama, samanjasa rati, where the love is divided. वो सिनारियो भी नहीं है, जो दूसरा वाला सिनारियो भी है। स्वकीय में कि कोई हेतुक से प्रेम करते हैं, जैसे बच्चों अभी नहीं है, तो हस्बैंड एंड वाइफ में स्वकीय वो दूसरी बात, वो हमारे She's talking about something else, about expectation from loving, giving love. But Maharaj is saying that just establishing that the love is divided. He's not talking about the motives of loving or sharing affection. डिवाइडेड हो जाता है, ये हो जाता है।
So in the normal sense of relationships, marriage relationships, the love is divided. In Parikya Bhav, only love and affection for Krishna, nothing else, nobody else. The gopis, they don't think of anything or anybody else apart from Krishna's pleasure. The love of the gopis for Krishna, why do we give so much emphasis on their love in the Gaudiya Vaishnava tradition? Why? In the gopis' love is only directed to Krishna's pleasure. What to speak of other persons. In svakiya, married relationships, this can be possible or can happen. Whether you are male or female, after your mind will go to another. Like Draupadi, the example is given in Mahabharata. When the Pandavas were staying in Ekandra, in isolation. There was only one fruit ripened on the tree. When the Pandavas were staying in that forest with Draupadi, what did Draupadi do? The Pandavas had gone somewhere. As she saw this one fruit, ripened fruit, only one, and in that time, an aerial voice sound. Oh Draupadi, you don't know, this forest belongs to one rishi, and he put this ripened fruit on this tree. You will be cursed. You'll be cursed for taking this fruit. And now Draupadi has taken the fruit. She cannot put it back. And the rishi will curse the Pandavas. At that time, the Pandavas returned. Draupadi said, I've taken this fruit, and this aerial voice came that this rishi will come and curse us to death. What to do now? Draupadi and the 5 Pandavas will be burnt to ashes. Draupadi began to cry. What to do? Yudhishthira Maharaj thought what could be the solution. At that time, looking at the tree, please forgive my offense. This fruit. May that fruit be returned to the tree. Then the aerial voice came again, O Draupadi, because if you tell the truth of what's in your heart to your husbands, then this fruit will be attached back to the tree. If you reveal your heart's desire to your husbands, in front of your husbands, then that fruit will be attached back. You should not hide anything that's in your heart. You should reveal what is in your heart. Any of your desires. At that time, Draupadi said, I had a momentarily desire to have Karna. Karna as my husband. Yeah. To have Karna as at that time, for her honesty, the fruit attached itself to the tree again.
अर्थात द्रौपदी के मन में क्या था? What was in the mind of Draupadi? जो कर्ण की To have कर्ण Karna. की पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए To भी have- मन में To have Karna as her इच्छा husband थी। because he was so attractive. हैं? Understand? In the heart of Draupadi, she. ये तो लीला कर्ण कम नहीं था, कर्ण भी भेद कर सकते थे। Karna was not an ordinary person. वही He लोग had करने this नहीं दिया ना। उस समय तो- ability to उस समय क्या? shoot the आप arrow उसमें देखना as matching जब Arjun. एक कृष्ण की चाल है सर। This is the play of जब कर्ण Krishna. ने लिया They forbid Karna to take part in this challenge. हैं? तब वो कृष्ण जो है द्रौपदी के द्वारा उंगली निर्देश कर रहे हैं। And Krishna pointed to Draupadi and forbade Karna to take तो part in ये the तो राजपुत्र challenge. नहीं, सुतपुत्र के साथ This is not a prince. He's a son of ये a हो गया। Sutta, low class. आज में उसको अपमान करेंगे। And then in this way she insulted Karna. कर्ण के मन में तो यही खेद आ। This is the pain in Karna's heart. He was no less than Arjun. प्रकार से कर्ण कम नहीं था। In no way was he any less than Arjun. किंतु कृष्ण ने क्या किया? आप But what did Krishna do जब वो when you लक्ष्मी see- हो रहा होगा when he was in this assembly द्रौपदी तो देखा to shoot the arrow in the eye of the fish? कर्ण एक्चुअली सूर्य पुत्र था कर्ण। So Karna was the son of the sun god. और अर्जुन जो है इसको कहा जाता है Arjun. इंद्र पुत्र कहा जाता है। Arjun was Indra's son. शक्ति से एक कौन कहाँ से होते हैं? तो कर्ण देखने में बहुत सुंदर था। Karna was very attractive. उसके कान में कुंडल, His earrings, और वो था, क्या बोले? kavach, कवच, हाँ, छाती में, है? छाती में, chest, what chest? कर्ण देखने में बहुत सुंदर था। He was very attractive. द्रौपदी के मन तो लग गया था। Draupadi was attracted to Karna, किंतु कृष्ण ने इंगित कर दिया। but Krishna indicated, आज कृष्ण इंगित कर दिया, बोले नहीं no, कर्ण के। don't accept Karna. इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। And there's one secret in this. ये द्रौपदी और कोई नहीं है। Draupadi ये द्रौपदी is, कौन जानते हो? ये छाया सीता है। this is Chaya Sita. Draupadi is actually अग्नि में से निकले हैं ना? came from the fire और sacrifice. ये तो छाया सीता है ना? जब रामलीला When जब in रामचंद्र Ramchandra's जब pastimes, जब Sita, और रामचंद्र ने ये क्या बोले असली सीता को ले लिया। she had to enter the fire to accept the real Sita. The other Sita said, where should I go? What is my place? I helped you in this pastime. तुम तो अपने सीता को ले लिया। Now you've taken your original Sita. And this shadow Sita said to Lord Ramchandra, where should I go? Sita, shadow Sita, you will appear in Krishna Leela. क्यों छाया सीता करी? आप मुझे पत्नी मान करके You will तुमने रावण के वध accept किया। नहीं तो रावण me को तुम वध नहीं करते। as your wife and killed रावण ने Ravan. किसने वध किया? Why did Ram kill पत्नी Ravan? को तो मुझे Because पत्नी मानना he had kidnapped Sita ये ब्रह्म वैवर्त पुराण in में this लिखा है। Brahmanda Vaivarta Puran. तो मुझे This जब pastime has आप been पत्नी ने described स्वीकार किया, because तो मुझे this आप तय shadow करो, मैं Sita कहाँ was accepted by Lord Ram as his wife. She needed somewhere to तो उस go. समय रामचंद्र ने कहा She needed a position, a role. Then Ramchandra said, in Krishna's तो pastimes, मेरा साथ है। you will help me. तो उसमें छाया सीता कहने लगी तो मैं Chaya तुम्हारी Sita किस्मत said, तो होगी। Your Krishna's pastime will be in Dwarpa अभी Yuga. चल रहा कौन सा? Treta Yuga is going on. इतने समय तो मैं कहाँ रहूँ? Where shall I stay for all this length of time? Lord Ramchandra said, you will go to Swarga Lakshmi. स्वर्ग में लक्ष्मी होकर रही। You will stay as Lakshmi Devi in Swarga, in heavenly planets. स्वर्ग लक्ष्मी होकर रही।
This Chaya Sita stayed as Swarga Lakshmi. There, and then she appeared as Draupadi in Krishna's pastimes. She had appeared from the fire. Is it possible for a lady to appear, a woman to appear from fire? But Sita, Draupadi appeared from the fire, from Dhanistha. इसलिए कह रहे ना, इसलिए कृष्ण यहाँ पर कृष्ण द्रौपदी के क्यों नहीं विवाह नहीं किया? Why Krishna did not अर्जुन के साथ विवाह करा दिया, marry Draupadi, but he got Draupadi married to Arjun. She is Chaya Sita, shadow Sita. सीता नहीं थी, वो कौन सा थी? छाया सीता. राम भगवान छाया के साथ विवाह नहीं कर सकते. The Lord cannot marry the shadow इसलिए किंतु उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया his energy. रामचंद्र. यहाँ पर लीला की दिखा रहे हैं. In this pastime, it is being shown. कृष्ण उनके द्रौपदी के विवाह क्यों नहीं किया? Why Krishna did not marry Draupadi? तो पत्नियों को विवाह किया. चलो He married so many queens. In Dwarka, 16,108. He could have married Draupadi. She was not less attractive because she was Chaya Sita, the shadow, not the original Sita or Maya Sita. How could the Lord marry Maya? He cannot. Just for the purpose of pastimes. And Krishna used to call her Sakhi. This is a secret. In Brahma Vaivarta Puran, it's been very nicely described. Why Krishna did not marry Draupadi? If he had married Draupadi, then this Mahabharata would not have taken place. Lord Ramchandra said, you help me in my pastimes in Krishna. Then she came as Draupadi. Without Draupadi, this Mahabharata would not have taken place. She was the cause. Draupadi was the cause of this. In Ramayana, and it's the same. This Chaya Sita was the cause of the Ramayana. This is the link. Lord Ram knew. He knows that there is no such thing as the golden deer. Sita asked Ram to go and get this golden deer. Did Lord Ram not know that there is no such thing? This is the purpose of pastimes in the Brahma Vaivarta Purana. जब भगवान रामचंद्र की ये लीला हो गया, क्या बोले? 12 साल करीब 12 साल वनवास में. After 12 years of residing in the forest, and 13th year had finished. 13th. About to start the 14th year, last year of exile. There's one more year left. At that time, Lord Ramchandra was thinking, I have to manifest two pastimes. I have to kill the demons. I have to liberate Ravan. And second, the reason I have come
विरह रस को आस्वादन करना and to taste the mood of separation. है, विरह रस को आस्वादन करना है। उस समय भगवान रामचंद्र विचार कर रहे हैं, Lord ये Ramchandra मेरे is तो 1 thinking, साल का रह गया, only अब तो 1 जिस year कारण से left, मैं वन में आया हूँ, रावण को and for the करना reason है, I have come, उनकी जो जय विजय की जो मैं उन्हें बोल दिया था, that to fulfill the promise I given to Jay and Vijay किंतु अभी तो पूरा नहीं हो रहा है। has not happened. Lord Ramchandra was feeling the pain of this. In Brahma Veda Puran is written. If you read, you'll be very happy. ये ब्रह्म वैवर्त पुराण करके हिंदी में मिलेगा, You'll find it in the Hindi. ये छाया सीता के बारे में, About Chaya Sita. सारे लिखा है। तो भगवान रामचंद्र विचार कर रहे हैं, जिस Lord कारण Ramchandra is जिस कारण thinking से मैं 14 साल के वन में to आया, all this. वो तो अभी तो पुरानी है, रावण वध कैसे होगा? How can I finish the pastimes of killing of Ravan? ये उसमें निधन आदि कैसे होगा? आज ये चिंतन कर रहे हैं। और दूसरी क्या था, ये मैं विरह रस कैसे आस्वादन करूं? How can I taste इस this समय तो भगवान रामचंद्र mood of जब separation? चल रहे Viraha. हैं, तो उस समय साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। At that time, Agni Dev, Devata, demigod of fire, अग्नि appeared देवता आकर के भगवान रामचंद्र के बोले, प्रभु and said to Lord Ramchandra, आपकी लीला को मैं कैसे सेव सकता हूं? how can I serve you in your तब भगवान pastimes? रामचंद्र बोले Then Lord Ramchandra कि said, तुम मेरे जो है असली सीता की जो है you तुम take लेकर के my original Sita इसमें रखो, and look after and शिव पार्वती के पास रखो। go and take Sita to Shiv and Parvati. और एक छाया सीता तुम प्रकट And then manifest one shadow तब उस Sita. समय अग्नि देवता जो है At that time, Agni वो एक छाया Devata सीता के प्रकट कराया, manifest वही one छाया सीता जो है shadow जिस दिन Sita. ये हरण हुआ था, सीता हरण हुआ था। That day that the original Sita was फिर kidnapped. उसी दिन ही अग्नि देवता और रामचंद्र के साथ वार्तालाप हुई। And that time, this dialogue between Agni Dev उस समय जो है and वापस Lord Ramchandra took स्वयं- place. स्वयं भगवान रामचंद्र सीता देवी की भी कहा, And at that day, he told Sita, तुम कुछ समय के लिए for some मुझसे time, छोड़ जाओ। you please stay with Shiv and Parvati. तो सीता देवी कल क्यों बोले मुझे Why? दो कार्य करना है। Because तो I have to do सीता these, देवी की perform बताया। these two pastimes. I have to पुराण में बता रहे हैं। kill ये Ravan मुझे and असुर निधन करना है। taste this ये जिस लाख mood में of मैं आया हूँ। separation. और दूसरी जो है तुम्हारे साथ मेरा विरह रस साधन करना है। सीता देवी करे प्रभु आपकी जैसी इच्छा है। Sita Devi agreed, and तो उस समय जो है वो सीता that देवी time, अग्नि में प्रवेश किया। she entered the fire, वो अग्नि देवता and जो then है, Agni Devata, the demigod of fire, took the original Sita and manifest a Sada Sita, just identical to the original Sita. मर्यादा में रहते थे। Lord Ramchandra stays in following the rules and regulations. बोले ऐसे दौड़ करके चलो। He was not under the control of Sita. रामचंद्र अपने आप सदा मर्यादा में रहते हैं। He was always staying in his position of following the rules and regulations of society. सीता देवी ने कही ये जो है सोने के हिरण के पकड़ करके लिया, तो रामचंद्र चले गए क्यों? Some people say that Lord Ram was controlled by his wife, but this is not true. This was part of the pastime that was arranged by him. असली सीता देवी सोच रहे ये शायद मैं सपनों देख रही हूँ, And ये भी विचार कर the real Sita, असली सीता the real Sita is thinking, she is thinking that I am in this dream. कुछ बोल रही हूँ, ये ठीक है, आपके दो लीला जो करना है आपको मैं ऐसा करूँ। So she's thinking in her dream that I am helping तो ऐसे करके my Lord सीता जो है Ramchandra. वो अग्नि देवता के माध्यम से
And this was arranged, this pastime was arranged by the Lord. Agni Dev is masculine, male. This Sita cannot stay with a male. And then that's the reason that Sita was taken to Parvati and Shiv. So she stayed with Shiv and Parvati. And then the pastime of Sita being kidnapped, this was the shadow Sita, not the original Sita. And then when she returned through the fire. And at that time, this shadow Sita was asking where she needed to go. Where could she go? She did not marry. At least he had spoken with his mouth. He acknowledged her as Sita, calling her Sita, Sita, and crying for her. This is a shadow Sita saying, what will be my destination? And he said, you will come in my Krishna Lila and help me. So Krishna did not marry Draupadi. She was Maya Sita. Cannot marry. और इसलिए जब वो हो रहा था क्या बोले इनके घर में विराट एक उसके जैसे अज्ञातवास नहीं अज्ञातवास नहीं जब वो the palace of wax. And that time कर्ण कर सकते थे कर्ण के बाद कम नहीं था किंतु कृष्ण ने द्रौपदी को मना कर दिया when they were in the assembly to marry the Pandavas by this competition of who could shoot the arrow in the eye of the fish, then Krishna forbade Draupadi to invite Karna to take part in that challenge. वास्तव में देखा जाए महाभारत के युद्ध में द्रौपदी है वही Draupadi was the shadow Sita in Ramchandra's pastime. In Ramchandra's pastime. And then she was Draupadi in Krishna's. She was Swarga Laksmi. And then she came. द्रौपदी के रूप में in the form of Draupadi. हमारा जो आपको कंपैरिजन करते थे तीन का ये तो लक्ष्मी जी का ये सब हुआ लक्ष्मी देवी इसलिए कहते हैं मान क्रोध मानाभास और मान. So we're comparing these three: Krodha, Maan, and Mana-abhasa. This is Lakshmi's anger, Satyabhama's Mana-abhasa, and the pure Maan of Srimati Radhika. If Srimati Radhika does Maan, then Krishna has to hold his ears. And Satyabhama's Maan is not real, because when Krishna becomes a little bit angry, Satyabhama conforms. When, just like in the pastimes of Parijat flower, Narad came with this flower and asked,
पुष्प बोलते हैं, छोटे छोटे सफेद पुष्प Krishna to give this हाँ, flower to हाँ, वो नहीं, his उसका favorite उसका नाम wife. भी पारिजात बोलते हैं लोग। लोग बोलते हैं असली पारिजात जो है The real Parijat. सर्वर में है। It's Swagala. हम लोग गए थे विदात, हाँ Lucknow. लखनऊ गए थे We went to Lucknow. और अयोध्या और लखनऊ के बीच में एक स्थान है, वहीं पर जो है Lucknow, there's one place, there's one Parijat tree. उधर जाना है। मैं लेकर गया but I did not bring Bring this Australia. time. He didn't bring to Australia. He had in Delhi. They will take. They cannot bring because Flower. very nice. बड़ा He has this Parijat flower with him in Delhi. When you get to Delhi. when you come in Delhi also. That's a flare, top flare. Yeah, custom they will take. They want it. They'll take, yeah. Very nice. Poor old Krsna. That's He right. brought it to England. Ah, He brought it to England. Parijat tree, yeah. No, the flower. Oh, yeah. The Parijat flower. Is it very I got scented? this quick art. I Very nice. don't know. उधर वो भी उधर गवर्नमेंट के द्वारा उस लोग सब सुरक्षित। And that in He heaven? brought it to our Yeah, house government when he came to is UK. very good. I just never got time to get him to show it to us. It's from a heaven? No, it's from this place between Lucknow and Ayodhya. Oh, There's okay. this one Parijat tree. Just one? One Parijat. Oh, wow, that's insane. Yeah. देखा पेड़ देखा It's only one. छोटे छोटे फूल नहीं इतना बड़ा बड़ा फूल It's a big flower. वो फूल जो है एक क्या बोले वो नीचे गिरने के साथ ही साथ ये हो जाता है And when it falls to the ground, it disperses. मुच्छा It becomes withered. पेड़ में जब रहता है सफेद में ऐसे सुंदर फूल है When it's on the plant, it's very beautiful. Oh, yeah. See. एक जगह गए थे वहाँ पर राम जी का बाण से पानी निकलते रहे। Parijat tree. It's only one tree. There's one tree. Just one. एक ही पेड़ था No, और down. It's got a flower. only one One tree. flower. No. Yeah. Does it produce a few? ये पारिजात पेड़ तो समुद्र से क्या बोले समुद्र मंथन से पारिजात When the ocean was churned, this Parijat tree came from the heavenly planets. These ingredients that came from the churning of the ocean. Okay. चलो 9 तो बजा दिया हमने So go Pranadaki Jai.